Everyone, a very good morning to all of you. Ask your friends to join on this ID. I gave you this ID yesterday. Ask your friends to join on this ID. We'll start exactly after 2 minutes. Ask your friends to join on this ID. Zambil, that means you must have joined late because in the lecture only I gave this new ID. There were a few people from Ahmedabad branch who did not have this ID. So I gave this ID here in this lecture. Talk to Chetan sir. Which branch you're from? तो अंधेरी ईस्ट वाले तो सबको मिला था, अंधेरी ब्रांच वाले सबको आइडिया आ गया था ये. Only Ahmedabad people did not have this ID. Arnav, I have already given you this ID, then what other message you are expecting? I don't understand one thing. Muzammil, I only gave you the ID yesterday on Insta. And Arnav, when I clearly told you yesterday that this is the ID for the new meeting, why do you need extra message now? Chaliye, let's get started. Yes, so in the last lecture, we started with this question, if I'm not wrong. We started with the question where budgeted profit was 32 per unit. Budgeted output was 10,000, actual output was 8,000. Budgeted output was 10,000, actual output was 8,000. And this was a structure available. 4,000 was idle time, abnormal idle time, and we were supposed to reconcile actual profit with standard profit in terms of variances. Correct? Now, reconciliation means giving reasons for difference between two profit figures. So you thought of producing and selling 10,000 units. You thought of earning 32 per unit. So you expected profit of 3,20,000. But you actually earned profit of 1,33,200. You actually earned a profit of 1,33,200.
So instead of 3 lakh 20, instead of 3 lakh 20, 1 lakh 33 200 was your actual profit. That means your profit went down by 186 800. Your profit went down by 186 800. That was your adverse variance. And then we started finding out reasons, because we are supposed to reconcile 3 lakh 20 with 133 200. We are supposed to find out reason for difference between these two profits. We are supposed to find out reason for 186 800 adverse. Am I right? We are supposed to find out reason for 186 800 adverse. So as I told you, your profit is an outcome of two things, sales and cost. So your profit variation is also an outcome of two things, change in the sales, change in the cost. Now your sales gets affected because of selling price and volume, but your volume gets affected because of sales and because of combination, mix and sub volume. You don't want sub volume to be considered, because sub volume is an outcome of market size and market share. So your first four reasons will be margin price variance, margin mix variance, margin market size variance, margin market share variance. Now, when you calculate these things, your sales variance formula remains same. जो ब्रैकेट आप सेल्स वेरिएंसेस में यूज करते थे, वही ब्रैकेट हमने यूज की थी. The only difference was, instead of applying budgeted selling price, we have applied budgeted profit per unit, because we are interested in knowing impact of variation in volume. We want to know impact of variation in volume on profit. We want to know impact of variation in profit, variation in volume, variation in quantity on profit. सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में भी सेम ब्रैकेट आप यूज करते हो. 10,000 बेचने का सोचा था, 8,000 बेचा है, and then you multiply that with budgeted selling price. Why? Because you are actually interested in, knowing the impact on sales. But now here you want to know the impact on, profit. So you are multiplying by budgeted profit per unit. I hope this is clear. मैंने नोट लिखवाई थी इसके लिए. मुझे सबसे पहले बोलो, ड्यू टू सेल्स वाला इम्पैक्ट क्लियर है? वेल, प्राइस से रिलेटेड अगर सोचोगे तो प्राइस में मार्जिन प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस सेम होता है. Because if I increase selling price by 1 rupee, my profit will also go up by 1 rupee. If I decrease selling price by 10 rupees, my profit will directly go down by 10 rupees. So sales price variance and margin price variance will always be the same, but volume variance mein bracket part will be the same, multiplier will change. Multiplier will be budgeted profit per unit now. So are you guys clear with 64,000 adverse? Is this clear, guys? Even in volume, we cannot say it would move in lines with selling price. Here, profit only taken. I didn't understand, Arnav. तेरा डाउट क्या ही है? मेरा डाउट है.
नोट दिया है वो पढ़. I have already explained this. I explained it twice now. If you apply selling price here, you will get impact of volume variation on sales. You want to know the impact on profit. That is why you are multiplying by profit. तेरा quantity 2000 से कम हो गया. When you multiply by 32, it will give you impact on profit. If you multiply by 140, it will give you impact on sales. You're not interested in knowing impact on sales. You're interested in knowing impact on profit. That is why it is multiplied. You please read the note. Acha, then second part was due to cost, and due to cost के लिए it was a very similar calculation. The standard was made available for 1 unit. The standard was made available for 1 unit. 2 units of raw material, 20 hours of labor. So we prepared a table accordingly. Standard was given for 1 unit and actual output was 8,000. Standard was given for 1 unit and actual output was 8,000. Standard was given for 1 unit, actual output was 8,000. So we converted everything into 8,000 level. As far as variable overheads are concerned, if there is nothing mentioned specifically about variable overhead hours, labor hours are considered to be the same. बिकॉज जितने आवर्स के लिए वर्कर काम करेगा उतने आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चलेगा. अगर वो अलग है, अलग हो भी सकता है, लेकिन अगर अलग है तो देना जरूरी है. 1,70,000 आवर्स वर एक्चुअली पेड फॉर, जिसमें से 4,000 घंटा था आइडल टाइम. 1,70,000 आवर्स वर एक्चुअली पेड फॉर, जिसमें से 4,000 घंटा था आइडल टाइम. सो when I found out actual variable overhead hours, I considered 1,66,000. Because idle time is unproductive. Unproductive means no quantity, no quantity, no variable cost. But labor may we have to include idle time here because even if it is unproductive, it is paid for. इसका भी नोट लिखवाया मैंने. इधर 1,70,000 आएगा, बाद में अलग कर लेंगे उसको. लेकिन यहां पर 1,66,000 ही आएगा. इट विल ऑलवेज बी नेट ऑफ. इट विल ऑलवेज बी नेट ऑफ आइडल टाइम. मैंने नोट लिखवाई थी, ये दोनों कैलकुलेशंस करवाए थे. Please have a glance on first 11 variances. Please have a glance on first 11 variances. So after these 11 variances, let me remind you something. Your efficiency variance calculation of labor and variable overhead was same. 1,60,000 hours my team should have taken to complete the work, but my team has taken 1,66,000 hours to complete the work. That clearly indicates my team is inefficient. So that's the reason I'm having an adverse variance here.
That's the reason I'm having adverse variance here. But now I'll be multiplying it by 2 and 0.4. 2 was my standard rate of labor and 0.4 is my standard rate of variable overhead. तो वेरिएबल ओवरहेड चाहिए तो वेरिएबल ओवरहेड रेट अप्लाई करो, एफिशिएंसी लेबर का चाहिए तो लेबर का रेट अप्लाई करो. इट्स वेरी सिंपल. दैट वाज योर आंसर फॉर एफिशिएंसी वेरिएंस. इनफैक्ट आप जब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालोगे ना तब भी ये सेम ही रहेगा. सो फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए आपको चाहिए 8 आइटम्स, 4 बजटेड आइटम्स, 4 एक्चुअल आइटम. Budgeted overheads, actual overheads, budgeted output, actual output, budgeted cost, budgeted hours, actual hours, budgeted days, actual days. So this was a table we started with. Please have a glance on fixed overhead variances on your own. I will later on give you a run through revision of that. First, you go through that on your own. Chaliye, done. So we did not have information about days. अब मैं पूरा fixed overhead variances का revision दे रहा हूं, ध्यान से देखना. बजटेड ओवरहेड्स मेरे पास अवेलेबल है, बजटेड आउटपुट मेरे पास अवेलेबल है, बजटेड आवर्स मेरे पास अवेलेबल है. मेरे पास अगर नहीं था तो डेज का इंफॉर्मेशन. तो 20 per unit and 1 per hour were my absorption rates. I couldn't go for per day because we did not have information about days. Now, when you don't have information about days, that itself is an indication that there is no variation in number of days. If you have planned to work for 25 days, you must have worked for 25 days. There is no second thought about it. If you have planned to work for 25 days, you have actually worked for 25 days. That is a reason why there is no discrepancy mentioned. So each unit should have given you 20 rupees back. Yes, each unit should have given you 20 rupees back. You have actually produced 8,000. So 8,000 into 20 must have given you 1,60,000 back. 8,000 into 20 will give you 1,60,000 back. Fixed overhead absorbed is 1,60,000, but you had to incur 184. Boss, if you're incurring 184, in reality, ideally you should have recovered 184. You should have absorbed 184, but you could absorb only 160. So that is an adverse variance of 24,000. Guys, are you clear with it? Then there are two reasons. I thought of spending 2 lakhs, but I managed to spend only 1,84,000. So 16,000 I saved. So that's a favorable variance. Volume variance. Volume variance. Volume variance, when I talk about, instead of 10,000 units, I managed to sell only 8,000 units. 2,000 units were sold less. 2,000 units were sold less. Each unit lost 20 rupees per unit. If I would have produced those 2,000 units at the rate of 20, I could have recovered 40,000 more from the market towards fixed cost. So 40,000 adverse, 16,000 favorable gives you overall adverse variance of 24,000. That was about first three variances. My second line of variances are volume variances ka sub-variances. Volume variance is an outcome of 4 things: calendar, capacity, idle time, efficiency. अब calendar यहाँ पे possible नहीं था because there was no information about days. मैंने note लिखवाई है. Since there is no information given about days, there is no calendar variance. और अगर day same है
तो सीधा यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो सकता है। मतलब अगर डेज सेम है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेज बजटेड डेज 25 थे, एक्चुअल भी 25 है। तो 25 डेज में 2 लाख आवर्स, 25 डेज में कितना, ये सब हरकत करोगे तो 2 लाख ही आएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में डेज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर 2 लाख माइनस 1,70,000. 2 lakhs I should have utilized, 1,70,000 I have utilized. 2 lakh I should have utilized, 1,70,000 I have utilized. 2 lakhs I should have utilized, 1,70,000 I have utilized. So it's an underutilization of 30,000 hours. It is underutilization of 30,000 hours. And if it is underutilization of 30,000 hours at the rate of 1, you're losing 30,000. So 30,000 adverse was your capacity variance. Underutilization, adverse. Then you have idle time, 4,000 hours into 1. And then finally, look at this 2 lakh hours mein 10,000 units. So actually we have worked for 166 hours. That means 8,300 units I should have manufactured during that phase of time. But I manufactured only 8,000. 8,300 units I should have produced, but I produced only 8,300 units. I didn't produce. If I would have produced those 300 units, बच्चा लोग, अगर मैंने वो 300 यूनिट बनाए होते तो मैं 2020 करके 6,000 और निकाल पाता कस्टमर की जेब से। और दूसरा एक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन आवर्स होता है, उसका भी कैलकुलेशन लिखवाया था मैंने। ऑफ कोर्स ये 10,000 यूनिट्स के लिए 2 लाख घंटा लगता है, तो एक्चुअली जो 8,000 बना है उसके लिए 1,60,000 में काम हो जाना चाहिए था। उसके लिए एक्चुअली 1,60,000 में काम हो जाना चाहिए था। हाँ, तो ब्रैकेट पार्ट चेक कर लो। कंपेयर दिस विथ लेबर वेरिएंस, कंपेयर दिस विथ लेबर एफिशिएंसी एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। कंपेयर दिस विथ लेबर एफिशिएंसी एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, ब्रैकेट पार्ट इज सेम। इसका भी नोट लिखवाया मैंने। लेबर एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, तीनों में ब्रैकेट पार्ट तो सेम ही रहता है, बदलेगा तो सिर्फ रेट। एंड वी गॉट दिस आंसर। I think all of you have this answer now. After this, they actually asked us, rather now we can start with the solution. Eh? Yeah, they asked us to reconcile two profit figures, no? So we were supposed to reconcile two profit figures, and for reconciliation, we went for all this calculation. Reconciliation means knowing difference, knowing reasons for difference. तो हमको पता चल गया कि मेरा प्रॉफिट मैच क्यों नहीं कर रहा। I got to know that why my budgeted profit got deviated and why my actual profit is different from what I had expected. So guys, let's do it simultaneously. You can start writing now. My main answer, see, अब तक हम लोग जो भी बना रहे थे वो सब वर्किंग नोट था, सब मोह माया थी। अब रियली आंसर, जो रियल आंसर है वो स्टार्ट होगा, एंड दैट इज reconciliation. And that is reconciliation. Okay, tell me how much is your budgeted profit? Your budgeted profit is 3,20,000. You guys agree with me? Your budgeted profit is 20,000, 3,20,000, and I want to mention all the reasons for difference between budgeted profit and actual profit. And trust me, my reasons start with a category. My first category is due to sales. Due to sales. और सेल्स की अगर बात करूं तो मेरे पास दो वेरिएंसेस है, मार्जिन प्राइस वेरिएंस एंड मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस।
मार्जिन प्राइस वेरिएंस तो खैर हमने निकाला था, नील था। मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हमने निकाला था, विच वाज 64,000 एडवर्स। तो सेल्स की वजह से नुकसान कितना हुआ? 64,000 एडवर्स। सेल्स की वजह से नुकसान कितना हुआ? 64,000 एडवर्स। सेकेंड पार्ट, ड्यू टू कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात करोगे तो सबसे पहले आएगी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 76 एडवर्स। बट ट्रस्ट मी बच्चा लोग, दिस इज नॉट दिस इज नॉट योर रियल रीजन, because cost variance comes into existence because of price variance and usage variance. और अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था कि हमको रूट लेवल रीजन चाहिए। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कॉस्ट वेरिएंस में, यूसेज वेरिएंस में। मुझे रूट लेवल रीजन चाहिए। इस क्वेश्चन में ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड करके कोई मटेरियल अलग अलग टाइप के नहीं दिए थे। I did not have different types of materials available here. So guys, मटेरियल अलग अलग ना होने की वजह से, मटेरियल अलग अलग ना होने की वजह से मिक्स वेरिएंस तो आया नहीं, तो सब वेरिएंसेस पॉसिबल नहीं है। तो आई विल बी स्टिक टू प्राइस एंड यूसेज विच इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी। सो 66 adverse, 10,000 adverse. Material price variance, 66 adverse. Material usage variance 10,000, 66 ही है ना? 66 एडवर्स एंड 10,000 एडवर्स, ये समझा? अरे हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो लेबर में क्या आएगा? कॉस्ट वेरिएंस ना, रेट आएगा, रेट। टाइम आएगा ना, आइडल टाइम एंड एफिशिएंसी आएगा। बिकॉज टाइम वेरिएंस इज नॉट अल्टीमेट रूट लेवल रीजन। रूट लेवल रीजन, टाइम वेरिएंस का भी दो रीजन है, आइडल टाइम एंड एफिशिएंसी। सो माय नेक्स्ट set of reason number 3, labor rate variance. Reason number 4, labor idle time variance. Reason number 5, labor efficiency variance. 68, 8, 12. 68, 8, 12. वेरिएबल ओवरहेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज वेरिएबल ओवरहेड में एनी विच वे कोई सब वेरिएंस एज सच नहीं होता, तो यही दो आएंगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस तो किसी मायने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें। 64 फेवरेबल, 24 एडवर्स। 64 फेवरेबल, 24 एडवर्स। 64 फेवरेबल, 24 एडवर्स। अब इसके बाद जो फिक्स्ड ओवरहेड्स की बारी आएगी बच्चा लोग, आई डोंट केयर अबाउट कॉस्ट वेरिएंस। फॉर मी बजट इज इंपॉर्टेंट। I don't care about volume. I need capacity, idle time, and efficiency. So my root level cost says my first reason is variance number 8, fixed overheads, budget variance, fixed overheads. I won't go for a volume.
So capacity variance, fixed overheads, idle time variance, and fixed overheads efficiency variance. 16,000 favorable, 30,000 adverse. 16,000 favorable, 30,000 adverse, 4,000 adverse, 6,000 adverse. 4,000 adverse and 6,000 adverse. hey बच्चा लोग, ये समझा है? आई हैव टेकन ऑल रूट लेवल कॉज. एक भी वेरिएंस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बाद कोई कैलकुलेशन पॉसिबल हो. मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी में वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. चलो इसका टोटल ले लो. एडवर्स विल बी सबट्रैक्टेड, फेवरेबल विल बी एडेड. 120 to 800. This is going to be 120 to 800 adverse. अब समझो बात को. 3,20,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था. सेल्स ने दिया 64,000 का नुकसान और कॉस्ट ने दिया फर्दर 120 to 800 का नुकसान. 3,20,000 में से 64,000 दिया नुकसान मुझे सेल्स ने, एंड 120 to 800 का नुकसान दिया मुझे कॉस्ट ने. तब जाके मेरा प्रॉफिट आके रुक गया. And that's my reconciliation, बच्चा लोग. Complete it. Let me know once it is done.
Purva, what exactly do you need? Unfolding slide means you want variances. Okay. You want these variances or you want this chart? Please take the screenshot of this. Thank you so much, everyone. I hope you understood this. So basically, reconciliation means giving reasons for difference between two different figures. So we had two different profit figures. We had two different profit figures. So that's fine. This is what we have got. This is what we have got. Due to sales, due to cost. I hope this is absolutely clear. So guys, we first solved one question on labor. After solving that, we also discussed what happens in material as well as variable overheads. That has covered your variable cost structure variance calculation. Then we also discussed variance calculation of fixed overheads. We also discussed variance calculation of sales. The entire unfolding I have shown you, I have discussed. Now we can start with CA final standard costing. We have also discussed profit variance calculation. So what exactly are we doing? In standard, we are comparing actual data with standard data. We are comparing actual data with standard data. If actual cost is more, it is an adverse variance. If actual cost is less, it is a favorable variance. If actual sales is less, it is adverse variance. If actual sales is more, it is favorable variance. Same thing is about profit. So we are not concerned about plus minus. If your profit is going to be more, it's favorable. If your profit is going to be less, it's adverse. It is that simple. If your profit is going to be more, it is favorable. If your profit is going to be less, it is adverse. It is that simple. प्लस माइनस फॉर्मूला कुछ नहीं, पूरा सम 4 सम सॉल्व किया हम लोग ने इन डिटेल, पूरा 0 टू फाइनल प्रॉफिट रिकंसिलिएशन तक. वी हैव नॉट यूज अ सिंगल फॉर्मूला. फॉर्मूला बेस पढ़ने का ही नहीं, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा. सिंपल लॉजिक याद रखना, कभी भी कोई भी अनफोल्डिंग कैसे भी कर सकते हो. ओके, सो नाउ you need to understand one important concept here. Standards are set in the beginning of the year. Achha, before I start with this, you tell me, have you understood everything? Is the backlog clear? Material, labor, variable overhead, fixed overheads, sales, profit. Sub clear hai? Okay. So standard is set in the beginning of the year. And throughout the year, actual is compared. And throughout the year, actual is compared with the standard. तो अगर आपने पूरा एक साल का स्टैंडर्ड सेट किया है और अगर हर महीने आप कॉस्ट निकालते हो, हर वीक कॉस्ट निकालते हो, तो एवरी वीक और एवरी मंथ यू विल कीप ऑन कंपेयरिंग द डिफरेंट एक्चुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर विद द सेम स्टैंडर्ड सेट बाय यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि देयर आर मार्केट फोर्सेस व्हिच मे चेंज योर पर्सपेक्टिव, व्हिच मे चेंज द कॉस्ट स्ट्रक्चर?
क्या होता है, स्टार्टिंग में तुम लोग को लगा था ऑन प्री कंसीव नोशंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंटेड सम प्लानिंग एंड प्रेसिडेंटेड एस्टिमेशंस, यू थॉट दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी 10। तुमको क्या जाता है एसी केबिन में बैठ के डिसाइड करने को, ओनर हो तुम लोग। यू डिसाइडेड कॉस्ट टू बी 10, यू डिसाइडेड कॉस्ट टू बी 10, मार्केट में कॉस्ट हो गई 12, तो तुम लोग तो डायरेक्टली बोल दोगे ना कि देयर इज एडवर्स वेरिएंस ऑफ 2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट फोर्सेस चेंज सडनली ड्यूरिंग द ईयर। साल के बिगिनिंग में नेक्स्ट 12 महीने के लिए स्टैंडर्ड सेट करके बैठे हो, दैट मींस यू आर समवेयर अज्यूमिंग दैट योर मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रेटजीज, मार्केट सिनेरियो विल रिमेन सेम, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अगर अचानक से मटेरियल कॉस्ट वेंट अप, अच्छे दिन नहीं आए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो वेंट अप। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो डीजल के बढ़ेंगे, सीएनजी बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन विल बी कॉस्टली। इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ा दिया अडानी ने, क्या करोगे? कॉस्ट विल बी मोर। सो व्हेन यू एंटिसिपेट, देखो कैसा है, अब मटेरियल महंगा हो गया है, जैसे ओनियन महंगा हो जाता है बीच में ही सडनली, पॉसिबल है ना, दीज आर ऑल फैक्टर्स डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस। तो अगर ऐसा हुआ तो मार्केट फोर्सेस के लिए तुम लोग मैनेजर को थोड़ी जिम्मेदार ठहराओगे। तो बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन मटेरियल में गो अप, लेबर रेट्स में इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में इंक्रीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्रीज, तो यार ये सारी चीजों के लिए यू कांट होल्ड योर managers responsible because these things are beyond their control, beyond their control. So ये जो variance आप निकालोगे दो adverse, it is actually speaking non controllable variance. It is actually speaking non controllable variance. क्यों? क्योंकि मार्केट में हुआ है, you don't have a control over market, you don't have a support over, I mean you don't have a command over market forces. तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे मैनेजमेंट जैसे ही रियलाइज करती है कि दैट देयर इज सम चेंजेस इन द मार्केट सिनेरियो, दे रिवाइज स्टैंडर्ड, एंड व्हेन दे रिवाइज स्टैंडर्ड दे गेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। व्हेन दे रिवाइज स्टैंडर्ड, व्हेन दे गेट रिवाइज स्टैंडर्ड, सपोज 13 रुपया होना चाहिए, मैंने कॉस्ट सेट कर दी थी 10, but after considering market forces related to material costs, labor costs, transportation charges, duties and taxes, import duty में change हो सकता है, after considering all these things my cost should be 13। अब मैं क्या कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, रिसर्च बंद करो अब। मैंने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड सेट कर दिया था 10, मैंने खुद ही उसको रिवाइज कर दिया 13 पे। मतलब मुझे खुद को पता था कि मेरे स्टैंडर्ड से 3 रुपए अब ज्यादा खर्च होने वाला है, लेकिन मेरे स्टैंडर्ड से सिर्फ 2 रुपया ज्यादा खर्च हुआ। मतलब मैंने जो रिवाइज स्टैंडर्ड दिया था उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली समथिंग फेवरेबल मस्ट हैव हैपेंड, उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली समथिंग फेवरेबल मस्ट हैव हैपेंड, करेक्ट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट traditional variance calculation, when you talk about traditional variance calculation, you guys go for standard minus actual.
Am I right? You guys go for standard minus actual. This traditional variance part is now split into two parts. One is planning variance, which is also known as revision variances, and the second one is operational variances. So planning variances and operational variances. Planning variances means standard set by you minus the standard revised by you. तो 10 - 13 आपको पहले से पता था कि 3 रुपए से कॉस्ट बढ़ने वाली है, लेकिन ऑपरेशनल मस्ट बी रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। और तुम लोग लॉजिकली अगर सोचोगे तो दोनों की टोटल ट्रेडिशनल है। अगर इसको ऐड करोगे तो रिवाइज रिवाइज विल गेट कैंसल्ड, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअली बचता है तुम लोग के लाइफ में। आपको समझ में आए वेरिएंसेस क्या कैसे, व्हाट इज द चेंज इन द वेरिएंसेस? प्लानिंग वेरिएंसेस, ऑपरेशनल वेरिएंसेस, मतलब यहाँ पे वर्कर, यहाँ पे मैनेजमेंट को पहले ही पता चल जाता है कि नहीं 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 यार, आई कैन नॉट होल्ड माई मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इट वॉज बाउंड टू हैपन, सो आई विल होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मेरा ऊपर का एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो मुझे ऐसा लगता था, और रादर मुझे ऐसा लगा था कि 10 रुपए का 10 रुपए में प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन उसके लिए 12 रुपए लग गए। तो ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या कहता है, तूने 2 रुपए ज्यादा खर्च किया। लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है कि देयर मस्ट बी सम अनकंट्रोलेबल सिचुएशन विच वाज बियॉन्ड कंट्रोलिंग कैपेसिटी ऑफ द मैनेजर्स। यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट में थोड़ा चेंज है। जैसे ही मार्केट आपको हिंट देता है दैट देयर इज अ चेंज इन द मार्केट सिनेरियो, यू रिवाइज योर स्टैंडर्ड। मतलब आपने स्टैंडर्ड सेट तो किया था 10 पे, बाद में यू ओनली रियलाइज दैट आइडियली आफ्टर कंसिडरिंग राइज इन ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर्स इट शुड कॉस्ट शुड गो अप टू 13। मतलब आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि 3 एडवर्स हो सकता है। जब आपने एक्चुअल ऑपरेशन चेक किया तो आपको पता चला 13 रुपए में जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो 12 में बना दिया है। तो भाई भाई ये वन फेवरेबल होता है। तो मैनेजर ने खराब काम नहीं किया, मैनेजर ने अच्छा काम किया। लेकिन ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या बोलता है, मैनेजर ने खराब काम किया, विच इज रॉन्ग नो। मैंने 2 एडवर्स को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। नॉन अनकंट्रोलेबल वेरिएंस 3 एडवर्स, कंट्रोलेबल वेरिएंस 1 फेवरेबल। अरे मुझे तुम लोग उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराओ ना जो मेरे कंट्रोल में। 10 का 13 होगा तुमको भी पता था, मैं तो फिर भी 12 करके बैठा हूं। तो 10 का 12 क्या देखते हो, 13 का 12 देखो। अरे 10 का 13 तो वैसे भी होने वाला था, मैंने तो 13 का 12 कर दिया। तो मैंने तो 1 रुपया सेव किया आपका, तो उसको देखो ना। अब बाकी सब चीजें क्यों देख रहे? आर यू गेटिंग मी? सो ये 10 का 13 होना is a planning variance, revision variance, and 13 का 12 होना is 13 का 12 होना is operational variance, and 10 का 12 होना is traditional variance calculation। ये है आपका चार्ट, कॉपी दिस।
Is it done? अरे, वापस समझाता हूँ। माइक बंद था यार, सॉरी।
चलो ये लिख लिया तुम लोगों ने, इतना लिख दिया ना? तो अब यहाँ पे दिस विल बी 3 एडवर्स, this will be 1 favorable, and this will be 2 adverse. करेक्ट? तो मैंने सोचा था 10 में बन जाएगा, 13 मुझे ही पता चला कि 13 लगने वाला है। तो 3 adverse was my I was mentally prepared to spend 10 rupees more. My manager has done a fantastic job. Instead of 13, he completed work in 12. So that was my one favorable, and that is why my net effect is only 2 adverse, जिसके लिए मैं जिम्मेदार मैनेजर को नहीं ठहरा सकता. He has done a great job. So this is planning, this is operational, and when you compare these two, it's traditional variance calculation. Copy कर लो. Is it done? चलिए. तो you have the first thing given in the question, planning and operational variance. Just have a glance on it. Just have a glance on it. पूरा का पूरा पढ़ लो ये यहाँ तक. Ex ante means estimated. Before it happens. आणि post and post means ex ante is before and ex post is after the instance takes place. So basically this is after it happens. तो एक्स अंते यानी कि एस्टिमेटेड कंपेयर करोगे एक्चुअल से तो प्लानिंग वेरिएंस निकलेगा. सो एक्स अंते एक्चुअल से कंपेयर करोगे तो ऑपरेशनल वेरिएंस निकलेगा. और एक्स अंते प्री अंते से, एक्स अंते एक्सपोज से कंपेयर करोगे तो प्लानिंग निकलेगा. मतलब आपको पहले से पता है एक्स अंते इज योर ओरिजिनल स्टैंडर्ड, एक्स पोस्ट इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड, एंड योर फाइनल इज एक्चुअल. इनका इलिस्ट्रेशन देखो. 4,500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 9,000 units का consumption should have happened. Correct?
But in reality, 4,500 into 2.25, 10,125 you have consumed. 9,000 you should have consumed. Then you only realize, no, 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 9,000 will not be enough. 10,125 should be the quantity. But the actual work done is completed in 8750 kgs only. 8750 kgs only. The price was estimated to be 12.5. Then you only felt, no, 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 it should be reduced to 11.50 because market is offering material at a cheaper rate. But when you actually went for purchasing it, it went up to 13. You understood this? So we have planning, we have operational, and we have traditional. आपको समझ में आ रहा है? अब इन्होंने देखो, ट्रेडिशनल वेरिएंस की बात करते हैं। ट्रेडिशनल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इनफ वी सॉल्व, इधर ही रफा दफा कर देंगे। 9,000 यूनिट्स आई शुड हैव प्रोड्यूस्ड। देखो, ट्रेडिशनल की बात अगर करते हो ना, तो ये रिवाइज को हाइड कर दो, देखना भी मत। ट्रेडिशनल quantity should have been 9,000, quantity is 8750। 9,000 के बदले 8750 में काम हो गया, मतलब 250 सेव किया, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, नॉर्मल मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस देखोगे तो 12.50 शुड हैव बीन द प्राइस, 13 रुपीज इज द प्राइस। सो 0.5 एडवर्स आएगा क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है, मल्टीप्लाइड बाय 8750, क्योंकि झटका तो तब लगेगा जब एक्चुअली खरीदोगे। आई नेवर गॉट अफेक्टेड व्हेन मर्सिडीज इंक्रीज इट्स प्राइस बिकॉज आई नेवर परचेज वन। तो यू विल बी हिट बाय द प्राइस राइज ओनली इफ यू बाय एंड कंज्यूम समथिंग। तो फिर तीसरा क्या होगा? कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस मतलब टोटल ऑफ दीज टू। या फिर ऐसा कर सकते हो, 1,12,500 देवर सजरो, 1,12,500 was expected to be the cost and 113,750 is the actual cost। 1,250 से कॉस्ट बढ़ गई तो इट विल बी एडवर्स वेरिएंस। वेरी सिंपल यार, क्या ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इज दैट क्लियर? नाउ योर नेक्स्ट कैलकुलेशन इज ऑपरेशनल। ऑपरेशनल ऑपरेशनल की बात करते हो तो कंट्रोलेबल आएगा। ऑपरेशनल की बात करोगे तो कंट्रोलेबल आएगा। ये सेम लॉजिक रे बाबू। ये देखो, 10,125 कंज्यूम होना चाहिए था, 8750 में काम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 11.50। अरे समझा कि नहीं बाबू? 11.50 के बदले 13 रुपया दे के आए हो, 1.5 रुपया ज्यादा दिया 8750 पे, तो ये होगा कॉस्ट प्राइस वेरिएंस। 116,437.50 के बदले 113,750 में काम हो गया तेरा। आई समझ गया रे? कॉस्ट वेरिएंस विल बी फेवरेबल। एंड फाइनली बचा क्या? प्लानिंग वेरिएंस। प्लानिंग वेरिएंस मतलब प्लान का हिस्सा। प्लान का हिस्सा तब होगा जब आप पहले से एंटिसिपेट करोगे। 9,000 यूनिट्स के बदले 10,125 लगने वाला है इंटू 12.5, ये खत्म। हैव अ ग्लांस ऑन दिस कंप्लीट कैलकुलेशन। ये इसको ऐसे रहने दो, तो 9,000 एंड 10,125 कहाँ से है पता चलना चाहिए। हैव अ ग्लांस ऑन दिस सॉल्यूशन क्विकली।
इज इट डन? चलिए आगे बढ़ते हैं. सी, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस, actual versus original standard, planning variances, revised versus original standard. Operational means actual versus revised standard. Yeah, you will keep on revising your standards, and your immediate preceding standard will be considered as ex ante. Once there is a revision, it is exposed. मतलब अभी जो मेरा प्लानिंग वेरिएंस है, अभी जो मेरा रिवाइज्ड है, उसमें भी चेंज हो गया, तो मैं अब मेरा अभी का प्लानिंग ओरिजिनल स्टैंडर्ड हो जाएगा, रिवीजन प्लानिंग रिवीजन हो जाएगा. Or you can consider only standard and you can keep on changing your revision as and when the time comes. Ideally, it should be done this way. Your traditional standard will remain same. Your original standard will remain same. बाकी जितने भी changes आएंगे, time to time अपना revised standard change करते रहो. Accordingly, your variances will keep on changing. Yes. चलिए. Question number one. Question number one. HDR Limited. HDR Limited produces units and incurs labor cost. A change in technology after the preparation of the budget resulted in 25% rise in the labor efficiency. 25% rise in labor efficiency is such that it is now possible to produce 10 units instead of 8 units using 8 hours of labor. So 1100 into 1 was expected. मतलब कहीं ना कहीं I was expecting 1100 hours work to be done. तो 1100 hours into 10, 11,000 कॉस्ट होगी. अगर एफिशिएंसी बढ़ गया तो आई रिवाइज्ड दैट स्टैंडर्ड टू 880. अब मैंने बोला कि अब 880 में बना दो बिकॉज एफिशिएंसी हैज गॉन अप. इन लोगों ने फिर भी 1200 घंटे लिए. अब देखोगे तो रेट आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग, रेट में चेंज आई वाज नॉट एंटिसिपेटिंग, लेकिन फिर भी हुआ है. आर्स में चेंज आई वाज एंटिसिपेटिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग आर्स टू गो डाउन, लेकिन आर्स तो बढ़ गए. Accordingly, there will be three variances. Traditional variances, planning and operational. तीनों पूछा है, तीनों पूछा है. देखो, सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है इसमें. जस्ट सॉल्यूशन एक बार देख लो अपने हिसाब से. जस्ट सी द सॉल्यूशन प्रॉपर्ली. ये टेबल में सामने रख रहा हूँ 1100 और 880 आवर्स के लिए. गो थ्रू ऑल वेरिएंसेस क्विकली.
नहीं, आई एम सिंपली ड्राइंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, डोंट वरी शिवानी. Yes, बच्चा लोग, I think that question you understood. Hmm? Now, let us understand the concept of standard costing using activity-based costing. अभी तुम लोगों को, you already know how to calculate variances. If it is traditional variance calculation, actual with standard. If it is planning variance calculation, it is revised standard compared to standard. And if it is and if it is operational, actual data is compared with revised standard. मटीरियल हो, लेबर हो, हम लोग ने दोनों के सम सॉल्व कर देखे, मैनेजेबल है, सब में सेम होगा. अब हम लोग ना अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विथ मार्जिनल, स्टैंडर्ड विथ एक्टिविटी, ऐसे कॉम्बिनेशंस. अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग व्हेन आई हैड डिस्कस्ड, मैंने जब मार्जिनल कॉस्टिंग आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा, देयर वाज अ फिक्स कॉस्ट व्हिच वाज बेस्ड ऑन 3 पार्ट्स. एक में सेटअप बेस था, दूसरे में आई थिंक कुछ मशीन आवर्स ऐसा कुछ बेस था, और जो बैलेंस कॉस्ट थी वो पीरियड कॉस्ट थी, पर एनम या पर मंथ ऐसी. बराबर? कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं. ₹1,00,000 की फिक्स कॉस्ट है, इसमें से 20,000 सेटअप कॉस्ट है, 30,000 is based on machine hours, and balance 50,000 is a period cost which is per annum. Is that part clear? Yes. अब क्वेश्चन ये कहता है कि there were total 100 setups, और अगर 100 सेटअप्स होंगे, there were 100 setups. So 100 setups होंगे तो कॉस्ट पर सेटअप will be 200, and cost per machine hour, सपोज ये खर्चा था आपका 1000 मशीन आवर्स का, तो कॉस्ट पर मशीन आवर्स वाज 30. बराबर है? ये रहे आपके कॉस्ट ड्राइवर्स, ये रहे आपके रेट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स. तो 100 सेटअप्स इंटू 200 पर सेटअप गिव्स मी 20,000. 1000 आवर्स इंटू 30 पर आवर गिव्स मी 30,000. लेकिन ये जो 50,000 है ना, इसका कुछ नहीं हो सकता. दैट इज अ 100%, 100% पर 100% पर एनम कॉस्ट, 100% पीरियड कॉस्ट. तो अगर मैं स्टैंडर्ड 100 से चेंज करके 70 कर देता हूं सेटअप्स, अगर मैं सेटअप्स 100 से चेंज करके 70 कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली 70 into 200 will take down my fixed cost to 14,000. और अगर ये चेंज हो गया, मैंने 1000 आवर्स से सपोज 900 आवर्स में काम करना शुरू कर दिया, तो 900 आवर्स इंटू 30 कैन टेक दिस कॉस्ट टू 27,000. लेकिन 50,000 पहले भी 50 था और आगे भी 50 ही रहेगा रे पगलू, बिकॉज इट इज पीरियड कॉस्ट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ड्राइवर. तो नई नवेली फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? अचानक से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 1,00,000 से कम होके 91,000 आ रही है. This is the impact of this is the impact of following activity-based costing in the cost structure. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आप फॉलो करोगे तो चेंज इन एक्टिविटी कैन चेंज द फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर यू इवन इफ देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट. ओ, समझ रहे हो? एकदम क्लियर.
तो बच्चा लोग, कैन आई से, अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो हरकतें आपकी वेरिएबल कॉस्ट जैसे होती है। 100 का, ओ माय गॉड, 100 का 70, तो 20 का 14 हुआ। 1000 का 900, 30 का 27 हुआ। करेक्ट? एक्चुअली इट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। एक्चुअली इट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, ये कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, लेकिन इट इज ट्रीटेड लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको वेरिएंस कैलकुलेशन अगर सीखना है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, तो दिमाग में एक चीज डाल दीजिए, जो हरकत आप फिक्स कॉस्ट के लिए अब तक वेरिएबल कॉस्ट के लिए करते आ रहे हो, वही हरकत आपको करनी है। दिस इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्लस वो एबीसी आएगा। मैं स्टैंडर्ड टेबल वगैरह कुछ लिख नहीं रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू शो एज इफ आई एम कैलकुलेटिंग variable cost variances. It is fixed variances only. Number of hours, rate, standard cost. Actual hours, rate, actual cost. Actual hours, rate, and actual cost. Is this part clear? अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। Question number 2. NNS company, NSC, is a multiple product manufacturer. NSC products, NSC produces the unit, and all overheads are associated with the delivery of units to its customers. Overheads 4,000, 3,900, output 2,000, 2,100, customer deliveries 20, customer deliveries 20 and 19. Customer deliveries 20 and 19. Calculate efficiency variance and expenditure variance by adopting ABC approach. सबसे पहली बात stop thinking on the basis of output. If you are following activity based costing, your base should be the activity. Are you understanding this? Yes or no? अब इन्होंने क्या किया देखो। How many deliveries were expected? 20. 20 deliveries for 2,000 units. तो अगर आप 21,000 बनाते हो, 2100 बनाते हो, तो आपके नंबर ऑफ डिलीवरी ज्यादा होने चाहिए थे। अब मेरा कैलकुलेशन देखो क्या कहता है। योर एक्चुअल आउटपुट is 2,100 units. Correct? And standard is given for 2,000 units. We can't see hours given in the question. We have number of deliveries. समझा चेंज कैसे हो रहा है? Rest everything is going to be same. Rest everything is going to be same, just like your material, labor and variable overhead variances. Just like your material, labor and variable overhead variances.
2,100 units you have actually produced, but the standard was available for 2,000 units. So number of deliveries were 20. When number of deliveries were 20, when the total output was 2,000. Number of deliveries 20 when the total output was 2,000. So 2,100 के लिए ये होना चाहिए था 21. अरे सिंपल सेम कैलकुलेशन रे, नाम का फिक्स्ड है. अगर कॉस्ट, ड्राइवर्स आपकी कॉस्ट बदल सकते हैं तो वेरिएबल जैसा ही ट्रीटमेंट देने का, बट डोंट डोंट गो फॉर, ये जो चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी की वजह से नहीं हो रहा है, डिलीवरीज की वजह से हो रहा है. मैंने दिया था ना ऊपर एग्जांपल, वो फिक्स कॉस्ट कैन बी डिफरेंट. चलो तुम लोग को वो मार्जिनल कॉस्टिंग का एग्जांपल याद नहीं आ रहा था तो मैंने अलग से एग्जांपल करके दिखाया था. When I change my number of setups, when I change my number of machine hours, automatically my total cost reduced. That was not due to quantity, that was due to change in the cost drivers. तो मतलब यार अपने लिए तो वेरिएबल जैसी हरकत हो गई. 2,000 यूनिट बनाने के लिए 20 डिलीवरीज लगते हैं, तो 2,100 के लिए 21 डिलीवरीज लगनी चाहिए. आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, क्वेश्चन देखना, आप क्वेश्चन देखिए, 4,000 you are planning to spend on 20 deliveries. 4,000 you are planning to spend on 20 deliveries. 4,000 you are planning to spend on 20 deliveries. That means 200 is your cost per delivery. So naturally, I'm anticipating 4,200 to be incurred. I'm anticipating 4,200 to be incurred. Question says 3,900 is my actual cost of 19 deliveries. 3,900 is my actual cost of 19 deliveries. So 3,900 divided by 19, 205 point something. मुझे डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए. आपको समझा क्या किया? I'm not writing it as variable cost structure. I'm treating it as a variable cost structure. आज तक फिक्स कॉस्ट आउटपुट के वजह से अफेक्ट नहीं होती थी, आज भी आउटपुट के वजह से अफेक्ट नहीं हो रही, आज वो डिलीवरीज के वजह से अफेक्ट हो रही. तो 2,000 के लिए 20 डिलीवरी, तो 2,100 के लिए आइडियली देयर शुड हैव बीन 21 डिलीवरीज at the rate of 200. The cost should have been 4,200, but you managed to complete everything in 3,900. ये टेबल कॉपी कर लिया, टेबल कॉपी कर लो, टेबल कॉपी कर लो.
डन। चलिए, सबसे पहले we'll go for cost variance. As usual, we'll go for cost variance. तो 4,200 के बदले 3,900 में खर्चा, 4,200 के बदले 4,200 के बदले 3,900 में ही काम तमाम करके आ गए। इसका मतलब 300 सेव हुआ, दैट इज फेवरेबल। रीजन, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये कहता है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये कहता है that the rate should have been 200 per delivery, but the rate actually is some 205 point something. तो रेट ज्यादा होगा कम होगा तो मैं तो अफेक्ट होऊंगा 19 डिलीवरीज के हिसाब से। सो कितना आता है? 100। अब 200 के बदले 205 दे रहे हो, मतलब दिस इज एन एडवर्स वेरिएंस। एंड फाइनली इट्स योर एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्टली वॉल्यूम, वॉल्यूम कुछ नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉल्यूम बिकॉज माई होल कैलकुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन, my whole calculation is dependent on drivers, तो मुझे absorption rate वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। My entire calculation is based on cost drivers. Since my calculation is based on cost drivers will change the direction. Cost driver बढ़ाया, cost बढ़ेगी, cost drivers कम किया, cost कम होगी। So 21 डिलीवरीज में होने वाला काम तुम लोग 19 डिलीवरीज में खत्म कर रहे हो, तो 200 रुपया पर डिलीवरी के हिसाब से यू आर सेविंग 400। सो 400 फेवरेबल, 100 एडवर्स will give you 300 favorable as your cost variance. Very clear? पूरा डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा because whenever you use ABC, whenever you use activity based costing in terms of fixed overhead, your absorption rate वगैरह old traditional methods are gone. The moment you realize that change in cost driver can change your fixed cost also, the way we discussed in decision making, क्वांटिटी के बढ़ने से, सेम रहने से, क्वांटिटी सेम भी रहेगी ना तो भी बदल सकता है बिकॉज बिकॉज इट इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। तो चेंज इन कॉस्ट ड्राइवर्स, change in cost drivers will change the fixed cost. So it is just like variable cost structure. I'm not saying that it is variable cost. I'm not saying that it is a variable cost. I'm saying it is treated like a variable cost and calculation is done this way. Is it done? So this was a combination of standard costing and activity-based costing. Your traditional fixed overhead variance calculation is dropped. You're no longer going for absorption rate-based calculation. You're simply focusing on cost driver-based calculation. So it will be treated as if you're solving variable overhead variances. So cost variance, expenditure variance, and efficiency variance are the three variances to be recorded. Shall I proceed? Okay, write on a note. Whenever activity-based costing is followed, 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 simply by changing cost drivers, simply by changing cost drivers,
Simply by changing cost drivers. Simply by changing cost drivers. Fixed cost can be changed. Fixed cost can be changed. Simply by changing cost drivers, fixed cost can be changed. And therefore, variance calculation must be done. And therefore, variance calculation must be done variance calculation must be done as if it is a variable overhead cost, as if it is variable overhead variance calculation, as if it is variable overhead variance calculation, as if it is variable overhead variance calculation. I hope you understood this. फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो 2 मिनट दे रहा हूं. ऑन पेज नंबर 13.8 ये थियरी दी है, एक बार ग्लांस कर लो. अर्णव तू सुनेगा ना मेरी बात तो सारी चीजें समझ में आई. Go through this theory part. ओके नाउ इसके बाद एक लर्निंग कर्व वाला कंसेप्ट है. मैंने कहा था आपको, मैंने प्राइसिंग में भी एक क्वेश्चन छोड़ा था लर्निंग कर्व से रिलेटेड. एक
रेलेवेंट कॉस्टिंग में मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था आपको, बट लर्निंग कर्व से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में बाद में कवर करूंगा, बिकॉज इट इज ऑफिशियली नॉट देयर इन द सिलेबस, सो मैं सबसे एंड में इसको कवर करूंगा. अब वेरिएंस एनालिसिस कैन बी डन. वेरिएंस एनालिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स. जैसे तुम लोग थ्रूपुट अकाउंटिंग में जैसे की फैक्टर का कैलकुलेशन करते थे, वहां पे यूज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस by applying relevant costing approach. Relevant costing approach means only relevant factors need to be considered. Only relevant factors need to be considered. मेरी बात ध्यान से सुनना. कोई रिसर्च नहीं चाहिए बीच में. पहले सुनो. 1 unit requires 2 kgs of raw material. 1 unit requires 2 kgs of raw material. मेरे पास मटेरियल लिमिटेड है. मेरे पास मटेरियल लिमिटेड है 20,000 kgs. अब मुझे 10,000 यूनिट्स अगर बनाने पड़े तो आइडियली दैट शुड हैव बीन डन इन 20,000 kgs. मतलब 20,000 kgs में अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडर्ड 10,000 यूनिट शुड हैव गॉट प्रोड्यूस्ड. राइट? इतना समझा है क्या? बोलो. 1 unit requires 2 kgs. I have 20 kgs material as a key factor. So ideally with 20,000 kgs, I should be able to get 10,000 units. Actual production is 9,000 units. Actual production is 9,000 units. And actual quantity consumed is also 20,000 kgs. आपको समझा क्या हुआ है? Ideally, standard for this should have been 18,000 kgs. बराबर? तो अगर आप 18,000 के बदले 20,000 कंज्यूम कर लेते हो तो 2,000 एक्सेस कंजम्पशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रोडक्शन मैनेजर. बराबर? अरे हाँ या ना? प्रोडक्शन मैनेजर वो बंदा है जिसको 18,000 किलो में 9,000 यूनिट्स बनाने चाहिए थे. बंदे ने 20,000 किलो डाल के 9,000 यूनिट्स निकाल लिए. मतलब अब जो मैं 1,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा नहीं बना पाया, इसका जिम्मेदार प्रोडक्शन मैनेजर है. पूरा का पूरा 10,000 के लिए जो मटेरियल चाहिए था, पूरा का पूरा ठूस दिया उसने सिर्फ 9,000 यूनिट्स बनाने के लिए. एम आई राइट? तो तुम लोग मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल लोगे. 18,000 किलो का काम आपने 20,000 किलो में किया तो 2,000 किलो मल्टीप्लाइड बाय रेट विल गिव यू एडवर्स वेरिएंस. बराबर? चलो, मटेरियल की प्राइस होनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड प्राइस शुड हैव बीन 10 पर केजी. तो 18,000 की कंजम्पशन के सामने 20,000 का कंजम्पशन हुआ है. Instead of 18,000, you have consumed 20,000. 2,000 kgs were consumed more at the rate of 10. 20,000 adverse is your usage variance. अरे हाँ या ना? अब जब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकालोगे तो 10,000 यूनिट्स के बदले 9,000 बिकता हुआ दिखेगा. Ideally, we hold volume variance. We calculate volume variance for this.
यस और नो? लेकिन सच बात बताऊं, ये मार्केटिंग मैनेजर की गलती नहीं है कि 10,000 के बदले 9,000 बेचा है। ये प्रोडक्शन मैनेजर की गलती है कि 10,000 के बदले 9,000 ही बना पाया, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल उसने ठूस दिया। So the relevant burden is not on sales manager. The relevant burden is on production manager. तो वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में से माइनस करके वो ये 20,000 का बर्डन डालेंगे हम लोग प्रोडक्शन मैनेजर के सर पे। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस विल इंक्रीज, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस विल डिक्रीज। समझ में आया? रेलेवेंट कॉस्टिंग, जो चीज मेरे लिए रेलेवेंट है वही कंसिडर करूंगा मैं। रेलेवेंट क्यों? क्योंकि यार कम है, स्केर्सिटी है, और वेस्ट कर दिया। समझ में आया? हे फटाफट बोलो मुझे सब लोग। आर यू गाइस क्लियर विद द एग्जांपल? देखो उन्होंने कोई एग्जांपल दिया नहीं है। आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। शैल आई प्रोसीड? रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, थ्रूपुट अकाउंटिंग सेम की फैक्टर वाला। नाउ गो थ्रू 6 and 7, सम सॉल्व करेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। 6, 7, 8 गो थ्रू करो। 6, 7, 8 गो थ्रू करो क्विकली। हम्म। अरे बोला तो सही तेरे को, अर्णव। 20,000 एडवर्स का जो बर्डन है, दैट हैज टू बी बोन बाय प्रोडक्शन मैनेजर। इट विल बी एडेड टू यूसेज वेरिएंस। वो सेल्स का जो जरा डिफरेंस आएगा, जितना एक्सेस यूटिलाइजेशन है, 2,000 किलो एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया। चल तेरे को इधर समझाता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। यू कंज्यूम 2,000 kgs मोर। अर्णव ध्यान से सुन। यू कंज्यूम 2,000 kgs मोर। 2,000 kgs में 2 kgs पर यूनिट के हिसाब से 1,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बन सकते थे फिनिश गुड्स के। तो 1,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लॉस्ट। सपोज उसका कंट्रीब्यूशन था 8,000, तो 8,000 एडवर्स वॉल्यूम वेरिएंस में से माइनस करूंगा मैं, और वो चिपकाऊंगा यूसेज वेरिएंस में। प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से 1,000 यूनिट्स नहीं बन पाए।
तो 1000 यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन दैट वी हैव लॉस्ट, द अमाउंट विच इज सैक्रिफाइस्ड, that will be removed from volume variance, sales volume variance, because it is no longer responsibility of manager. ऐसा नहीं कि वो बेच नहीं पाया, प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से वो बना नहीं पाया, इसलिए बिका नहीं है. So let that 8000 be posted to usage variance. तो यूसेज वेरिएंस 20,000 एडवर्स दिख रहा है, वो और एडिशनल 8,000 रुपए आ जाएगा उसमें. So contribution lost will be added to usage variance and it will be deducted from volume variance. Arnav, is this clear? Chalo. Now the best calculation, standard and marginal costing है. स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमको अलग अलग टॉपिक करवाए थे, तूने फाइनल में भी अलग अलग करवाए, अचानक से साथ में कैसे आए, हो सकता है. मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम व्हेन यू फॉलो, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम व्हेन यू फॉलो, सबसे पहले तो तुम लोग का पूरा नक्शा बदल जाता है. सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट, नो लॉन्गर एग्जिस्ट. It is sales minus variable cost, contribution minus fixed cost, then profit. Sales minus variable cost is contribution minus fixed cost is profit. Correct? अब मेरी बात अच्छे तरह से सुनना, ध्यान से सुनना. मार्जिनल कॉस्टिंग में, since there is no extra fixed cost incurred, marginal costing में since there is no extra fixed cost incurred, contribution and profit both are same. अगर ये नहीं होती तो कंट्रीब्यूशन की फिगर, प्रॉफिट की फिगर सेम होती. तो मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट सेज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यू कैन टेक ऑल योर डिसीजंस बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन. Instead of taking decisions based on profit, you can take all your decisions based on contribution. तो मतलब जहां जहां पर प्रॉफिट यूज करते थे वहां वहां पर कंट्रीब्यूशन आएगा. समझा रहा हूं. अपना कल का वेरिएंस चेक करो, हम लोग ने वो प्रॉफिट वेरिएंस निकाला था, याद है आपने? याद है आपने प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया था. अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे बच्चा लोग, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे, ए बछड़ा सुनो, अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट के बदले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करना है. आपको यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट के बदले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करना है. पर सर फिर डिफरेंस आएगा, आने देना. And since you are using marginal costing, since you are not using absorption costing, all those variances of fixed overheads, all those variances of fixed overheads, जहां पे absorption rate को बेस बना के कैलकुलेशन किया था, वो सारे वेरिएंसेस अब नहीं आएंगे. वॉल्यूम वेरिएंस नहीं आएगा, कैलेंडर नहीं आएगा, कैपेसिटी नहीं आएगा, आइडल टाइम नहीं आएगा, एफिशिएंसी नहीं आएगा. देखो एफिशिएंसी में भी तुम लोग आइदर यू आर अप्लाइंग पर आवर और पर यूनिट, जहां जहां पर एब्जॉर्प्शन का टेक्निक आता है वहां वहां पे नहीं आएगा. अच्छा, ये कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला था आप लोग ने? एब्जॉर्ब्ड माइनस करके ना, एब्जॉर्ब्ड माइनस करके किया था, मतलब ये भी नहीं आएगा. तो आएगा क्या? सिर्फ वो वेरिएंस जिसमें एक भी एब्जॉर्प्शन रेट आपने नहीं लिया था. ओनली बजटेड वेरिएंस विल बी कैलकुलेटेड. आर यू गाइज एब्सोल्युटली क्लियर? नो डाउट. आगे बढ़ते हैं. सो when I talk about marginal costing, there are two changes. When I talk about marginal costing, there are two changes. Accordingly, the absorption of fixed costs and variances derived do not feature in marginal costing system. समझ में आया?
और जहां पे और एक लाइन और लिख दो, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट per unit, contribution per unit needs to be used. Instead of profit per unit, contribution per unit needs to be used. ये इधर लिखा है इन लोगों ने, बट फिर भी आप लिख लो. समझा? ओ इसको क्या हुआ? ओ भाई, और जी इसकी क्यों घंटी बज गई भाई? Sorting it out. Give me 5 minutes. There is some laptop issue. Yes. Can you see me? Or yes or no? Okay. Chalo. So you understood what is
Marginal costing, दो changes. Instead of profit per unit, start using contribution per unit. So margin volume, margin mix, margin sub volume, market size variance, market margin, market share variance, सब में बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट के बदले बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा. सेकेंडली, फिक्स्ड ओवरहेड्स में ऑल वेरिएंसेस will be nullified. Only one variance will be calculated where absorption rate is not applicable, and that is going to be expenditure variance. So expenditure variance will be cost variance. Okay. मुझे बताओ यहाँ पे किसी को डाउट मार्जिनल में? क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड और एल्स आई विल स्टॉप आस्किंग. आई विल गो अहेड. पूछ लेना बाद में आराम से. हाँ, नेक्स्ट आइटम पूछा है इन लोगों ने, रिकंसिलिएशन. मेरा फॉर्मेट देखो और मुझे बताओ ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ. और ये गोला देखो, रूट लेवल का ही गोला दिखेगा आपको. रूट लेवल का ही गोला दिखेगा आपको, क्योंकि रूट लेवल ही रीजन है. एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो. एक बार पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो. मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप देखोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आप देखोगे, देयर इज ओनली एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बाकी सबके लिए नॉट एप्लीकेबल लिखा है. समझा? फॉर्मेट इनका थोड़ा अलग है, अपना अलग है. मैं लॉजिकली देता हूँ. बजटेड प्रॉफिट चेंज, पहला चेंज ड्यू टू सेल्स, दूसरा चेंज ड्यू टू कॉस्ट, तो अपने आप एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है. ये बहुत स्कैटर्ड तरीके से दिया है. यू फॉलो माई टेक्निक, नो प्रॉब्लम. So ये reconciliation as per absorption, reconciliation as per marginal. Have a glance on reconciliation quickly.
That is just a standard profit. When you take standard profit, see, there is a difference between, but okay, there is a difference between budgeted profit and standard profit. Budgeted profit means budgeted quantity multiplied by budgeted profit per unit. Standard profit means actual quantity multiplied by budgeted profit per unit. मतलब मैंने सोचा था 20,000 यूनिट्स बनाऊंगा, मैंने 15,000 बना दिए. मैंने एंटिसिपेट किया था 10 per unit as profit, so 20,000 into 10, 2 lakhs is my budgeted profit. But since I have produced 15,000, 15,000 का profit, what should have been profit of 15,000? It's 1.5. This is standard profit. So 1.5 lakh से start करता हूं तो मेरे volume में तो कोई change ही नहीं है. Actual output is also 15,000 actual and standard is also 15,000. That means there is no volume related variances. समझा रहा हूं? तेरे कान में घुसता ही नहीं है लगता है. ये क्या लिखा है इधर? क्या लिखा है इधर? Budgeted. So budgeted quantity minus profit per unit. तो this is related to budgeted quantity, बाकी everything is related to actual quantity. तो volume में difference आएगा ना. पहले इसका सुन, बाद में इधर उधर का बात कर. मेरी बात सुन पहले. I know you are asking about the third one, but you did not understand only what I'm saying. This is budgeted profit. So budgeted quantity into profit per unit करेगा तू. लेकिन ये क्या है? तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट पर यूनिट करेगा तू. तो पहले केस में तेरा प्रॉफिट वाज बेस्ड ऑन बजटेड, विच वाज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल. इधर प्रॉफिट भी एक्चुअल का, कॉस्ट भी एक्चुअल का, तो वॉल्यूम वेरिएंस 0. तो अभी भी तुझे बोल रहा हूं, जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो सोचना बंद कर दे. चलो क्वेश्चन नंबर 4. वेल नोन फुटवेयर WF is a shop that focuses on shoes for various sports and activities like jogging, cricket, tennis, hockey. Budgeted profit for the WF is calculated considering an average selling price of 500 per pair of shoes, an average cost of 350 per pair of shoes. So guys, in short, they're telling us that contribution per unit is 150. Now, one unit is one pair now. You're selling shoes, so you don't sell it single. So one pair is one unit, so 150 per unit is 150 per pair. In addition to this base wages, sales staff gets payment equal to 5.5% of takings. This is your commission. This is another variable cost. Staffing levels are not expected to change in the response to the little changes in shoe sales. In September 2023, WF had budgeted sales of 2250 pairs and 650 staffing hours. अच्छा, स्टाफिंग आवर्स अगर 650 है, स्टाफिंग आवर्स अगर 650 है और आर्ली रेट अगर 125 है, तो 650 इंटू 125, 81,250 आपका होना चाहिए लेबर कॉस्ट. पहले इतना बताओ, समझाया क्या? 650 इंटू 125. चलो, एक्चुअली कितना बेचा है? दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी, दिस इज बजटेड क्वांटिटी. कॉस्ट ऑफ शूज दिया हुआ है 825, 825 ऑफ 2,500. मतलब एक्चुअल रेट भी कुछ अलग हुआ, स्टाफ पेमेंट अलग हुआ, स्टाफ बेस वेजेस अलग हुआ,
तो प्रॉफिट इज 2,30,875. प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट एंड कमेंट ऑन सुपरवाइजर्स परफॉर्मेंस. पे सबसे पहली बात याद रखनी, अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो, अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो बजटेड प्रॉफिट के साथ साथ एक्चुअल प्रॉफिट भी मालूम होना चाहिए. अब आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आपको एक्चुअल प्रॉफिट तो दे रही है, लेकिन बजटेड प्रॉफिट गायब है, तो बजटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले. यू हैव 2250 पेयर्स expected. 2250 pairs multiplied by 150. आपको 337,500 का टोटल कंट्रीब्यूशन देगा. या फिर ऐसा कर सकते हो आप, ये 500 का आपका पेयर है ना, तो 500 इंटू 5.5, 500 इंटू 5.5, 0.275 विल बी द कमीशन पेड. अरे 500 इंटू 5.5, 0.275 विल बी द कमीशन पेड पर यूनिट. ऊपर से वेरिएबल कॉस्ट इज 350. सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 350.275. इसको 500 से माइनस करूं तो मुझे 149.725 नाम का अमाउंट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है, मल्टीप्लाइड बाय 2250. समझा? ये बजटेड है. अरे ये सर नो. अब आपके बाकी के बजटेड कॉस्ट माइनस कर दो. 650 मल्टीप्लाइड बाय 125, 81, 250 और माइनस होगा तो कैलकुलेशन गलत गया. 500 की सेलिंग प्राइस, 5.5 का कमीशन, 27.5, 27.5 प्लस 350 की वेरिएबल कॉस्ट 377.5 माइनस 500. हम्म सो 275, 625. आपको समझा कहाँ से आया ये? 500 की सेलिंग प्राइस, 500 के सेलिंग प्राइस पे 5.5 का कमीशन, मतलब 27.5 का कमीशन जाएगा हर एक यूनिट पे, प्लस हर एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट 350, तो 377.5 विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. जो फिक्स कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस से माइनस करोगे तो 122.5 आपको मिलता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड क्वांटिटी 2250. सो 275 625 will be your 275 625 will be your budgeted data. करेक्ट. अब बाकी दुनिया भर का बजटेड कॉस्ट स्ट्रक्चर माइनस कर लो. 81,250 as you said, labor cost 194,375, 194,375. समझा? ओके. मुझे स्टार्ट करना है यहाँ से, पहुंचना है यहाँ पे. तो इनका स्ट्रक्चर देखो. They have taken budgeted data, actual data. सेलिंग प्राइस 480 कहाँ से मिली भाई? 12 लाख का रेवेन्यू दिया है 2,500 का, तो 480 मस्ट बी द सेलिंग प्राइस.
12 lakhs divided by 2500. 825 कॉस्ट है 2500 की, तो 330 का होगा वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर, बराबर। अच्छा, 480 का 5.5%, 26.4, तो ये होगा आपका रिवाइज कंट्रीब्यूशन। Contribution multiplied by quantity will give you net contribution, बट मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पे नहीं जाना चाहता। आई एम राइटिंग रेवेन्यू, कॉस्ट, स्टाफ एडिशनल पेमेंट। स्टाफ एडिशनल पेमेंट समझा ना कहाँ से? They have given it to be, expected it to be 66,000. Now, 78,125 is the labor cost incurred at the rate of 125. तो 625 hours हुए, 625 hours हुए, hourly rate is 125. Hourly rate is 125, so that gives you 78,125 आंसर। ये समझा फिगर कहाँ से आया? अरे, इज दिस क्लियर? सबसे पहले इन लोगों ने प्रॉफिट वेरिएंस निकाल के छोड़ दिया। माय प्रॉफिट शुड हैव बीन दिस, माय प्रॉफिट इज एक्चुअली दिस। तो कितना वेरिएशन है? 36,500 फेवरेबल, 36,500 फेवरेबल। अच्छा, मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से जाना है, करेक्ट? तो यहाँ पे देखो, वॉल्यूम का वेरिएशन क्या है? 2250 should have been the quantity, 2500 is the quantity. 2250 multiplied by 2500 into budgeted contribution 122.5, 250 into 122.5, 30,625। ये देखो, अब कितना गंदे तरीके से लिखा है इन लोगों ने। अपना सिंपल तरीका लिख लो उधर ही टेक्स्ट बुक में। अरे, 2250 के बदले अगर 2500, 2250 के बदले अगर 2500 बेचते हो तो हर एक का 122.5 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, जो 30,625 है। मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? अरे जल्दी बताओ भाई। जहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट यूज करना था, मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज कर दिया। आपको इनका कैलकुलेशन नहीं जम रहा है तो मत फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कैलकुलेशन फॉलो करो, लॉजिकल है। 2,250 आई थॉट ऑफ सेलिंग, 2,500 आई एक्चुअली सोल्ड, 250 एक्स्ट्रा आई हैव सोल्ड, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मार्जिनल है ना, तो बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी यूज्ड, करेक्ट? अच्छा, तीसरा होगा प्राइस वेरिएंस, मार्जिन प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएशन तो 500 के बदले 480 में काम हो गया। 500 के बदले 480 में काम हो गया। कितने शूज एक्चुअली खरीदे? 2,500, तो हर एक पे 20 रुपया बच गया यार। दैट इज माई 50,000 एडवर्स। बाकी सब नल्ला मुंह माया है।
मेरा फंडा फॉलो करो, आई एम टेलिंग यू। ये हटा रहे इसको। साहिल जी, कृपया। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। आपको समझा ना, उनका गंदे गंदे फॉर्मूलास फॉलो करने के, फॉर्मूला पे जाने का ही नहीं, कॉमन सेंस अप्लाई करो। मुझे सबसे पहले बताओ, आर यू गाइस क्रिस्टल क्लियर टिल 50,000? तो ड्यू टू सेल्स इज डन, ड्यू टू सेल्स इज डन, ड्यू टू कॉस्ट बचा है। कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट इंपैक्ट, लेकिन कैसा है कि हमको वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, दिस इज योर एक्चुअल क्वांटिटी, व्हाट शुड हैव बीन द कॉस्ट? 350, your cost should have been 350, but your actual cost is 300, 330, बराबर ना? If your budgeted cost is 350, तो 2,500 into 350 should have been the cost 875, but your actual cost is 825, so इधर भी 50,000 बच गया। ये कैलकुलेशन समझा आपको? If I'm producing 2,500, it should have been, चलो इसका भी शॉर्टकट बता देता हूँ। Cost should have 350, but it is actually 330। कितना बचा है आपने? राइट, 20 यूनिट्स ना, 20 रुपीज ना, तो 2,500 एक्चुअल क्वांटिटी पे कितना बचेगा? समझे? अरे यस और नो? कमीशन का वेरिएंस देखो। अच्छा, तुमको समझा ये शू कॉस्ट वेरिएंस कहां से निकला है? 350 पर यूनिट शुड हैव बीन द कॉस्ट, 330 पर यूनिट इज द एक्चुअल कॉस्ट। 20 रुपए सेव किया 2,500 एक्चुअल यूनिट्स पे, तो 50,000 का फायदा, हाँ या ना? अरे ये सोनो, कुछ तो बोलो यार, नहीं समझ रहा तो मुझे बोलो, आई विल रिपीट इट। बट आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, उनका भयंकर सॉल्यूशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस सो फार? अभी इसके बाद कमीशन भी अफेक्ट हुआ है। कमीशन कितना था? 5.5%। कमीशन 5.5% था। अरे तो हाउ मच इज वेरिएबल कॉस्ट? इट्स 5.5% ऑफ 500, बराबर? 5.5% ऑफ 500 मतलब सेलिंग प्राइस। एक मिनट ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। सेलिंग प्राइस 500 एक्सपेक्टेड थी, उसका 5.5, 27.5 कमीशन एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस 480 हो गई, तो 5.5% कमीशन वाज 480 इंटू टू 5.5%, 26.4 हुआ। तो 27.5 के बदले 26.4 होता है, तो यू आर सेविंग 1.1 ऑन 2,500, बराबर? पहले बोलो यस और नो। अब मैं शॉर्टकट समझाता हूं। योर कमीशन इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, फॉर्चुनेटली परसेंटेज इज 5.5 ऑन बोथ, तो प्राइस में जो चेंज होगा
उसी का 5.5% कमीशन में चेंज होगा। एमसीक्यूज निकालने का है तो इतना सब कैलकुलेशन नहीं करने का। सेलिंग प्राइस में चेंज है, ओके। तो कमीशन में भी चेंज होगा, ओके। तो कमीशन का अलग से क्यों निकाल रहे हो? सेलिंग प्राइस अगर कमीशन अगर 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है तो कमीशन का वेरिएंस भी 10% ऑफ सेल्स प्राइस वेरिएंस ही होगा। कैलकुलेट करके देखो ना, 50,000 इंटू 5.5, 2750। आपको समझ में आया? आप कोई भी, दोनों मेथड में दे रहा हूं, मैं अपना मेथड भी दे रहा हूं, वो मेथड भी दे रहा हूं। करेक्ट। और स्टाफ वेजेस तो ये बेस वेजेस है यहाँ पे, 81,250 माइनस 78, तो ये भी समझ में आ गया। एक काम कीजिए, कमीशन के लिए एक नोट लिख दीजिए। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये मेथड तो है ही आपके पास, बट आई वांट यू टू राइट वन मोर। बजट परसेंटेज अलग होता तो ये टेक्निक फॉलो करते, अलग से निकाल के। इधर पहले लिखो, इधर इधर 27.5 माइनस 26.4, ये कमीशन सेव किया। अच्छा, इन्होंने बोला होता बजटेड कमीशन वाज 5.5%, एक्चुअल कमीशन इज 6%, तो 500 का 5.5 अप्लाई करते, 480 का 6% अप्लाई करते, दोनों कमीशन पर यूनिट मिलता, मल्टीप्लाइड बाय 2500 करते। प्रियांक, इज दिस क्लियर? अरे इज दिस क्लियर प्रियांक? किसी को डाउट नहीं है ना? इधर नोट लिख लो, इधर 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 नोट लिखना है आपको। Since commission is 5.5% of sales, since commission is 5.5% of sales price, since commission is 5.5% of sale price, since commission is 5.5% of selling price, since commission is 5.5% of selling price, commission variance will be 5.5% off. Commission variance will be 5.5% off. 5.5% off. 5.5% off sales price variance. 5.5% of sales price variance. 5.5% of sales price variance. 5.5% of sales price variance. आपको समझ में आया? That is 5.5% of 50,000 favorable. Oh, 50,000 adverse. 5.5% of 50,000 लिखो. 5.5% of 50,000. 5.5% of 50,000 is equal to 2750. Is equal to 2750. Is equal to 2750. ये मिला। अब फेवरेबल क्यों? कंटिन्यू। With the reduction in selling price, with the reduction in selling price, commission reduces. With the reduction in selling price, commission reduces. Hence, with the reduction in selling price, commission reduces. Hence, favorable. Hence, favorable. आपको मेरे सॉल्यूशन सिंपल लग रहे तो वो फॉलो करो, आपको उनके सॉल्यूशन सिंपल लग रहे तो उनको फॉलो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम होना चाहिए। आई होप यू हैव रिटन माय सॉल्यूशंस। वेरिएबल एंड दिस इज कमीशन। चलिए
Question number 5. Fixed cost दिया है क्या? Arnav, is there any fixed cost given? Is there any fixed cost absorption rate given? No, that means they're not interested in fixed overheads. And when you are not interested in fixed overheads, when you follow marginal costing. Yeah, that's fine, no? It is a fixed cost for 650 hours. Whether you work, whether you don't work, you are paying them. The staff is for 650 hours per month. So it's fixed. It's not 3 rupees per unit, 4 rupees per unit. Per unit होगा तो variable. Clear? Do you have absorption base? Do you have absorption base given? No. Budgeted days, actual days, they have not anticipated. So they're not interested in following fixed overheads as a base. If they were interested in finding, if they were interested in using absorption costing, if they were interested in using absorption costing, they would have given you other information also, budgeted fixed cost. They would have given you actual fixed cost. They would have given you the difference. They would have mentioned budgeted hours, actual hours. They would have mentioned budgeted days, actual days. कुछ तो hint दिया होता regarding absorption. कुछ नहीं बोला है. और सीधा सीधा अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट अलग करके दिया है, दैट मींस दे आर फोकसिंग ऑन वेरिएबल कॉस्ट. We can't find out variable labor cost per unit and then go for profit. There is no need. There is no absorption technique needs to be followed. See, my labor cost is expected to be 78,125. Actually, it is incurred at actually it is 78,125. It was expected to be at a different level. That is all because of change in number of hours. So I'm not taking it as a part of contribution, but that is fine because it is not directly affecting the product. And at the same time, I'm not considering it as a separate fixed cost. मतलब उसका वेरिएंस तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया है. ठीक है. दिस इज बजटेड, दिस इज एक्चुअल. एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ बोला ही नहीं. सो आई एम नॉट गोइंग फॉर एब्जॉर्प्शन. क्लियर? Yes or no? Question number 5. Osaka Manufacturing Company is a leading consumer goods company and the budgeted and actual data for OM for the company is as follows. Budgeted data, actual data, budgeted quantity, actual quantity, sales दिया है, budgeted actual variable cost दिया है, budgeted actual fixed cost दी है, budgeted actual profit दिया है, budgeted actual. The budgeted data shown, the budgeted data shown that shown in the table, sorry, the budgeted data shown in the table is based on an assumption that the total market size would be 4 lakh units, but it turned out to be 3,75,000 units. हुआ क्या है रे? क्या हुआ क्या है? You expected market size to be 4 lakhs. And at that level, you estimated your production to be
2 lakhs. That means you anticipated. नहीं, step by step जाते प्रियांक. You anticipated market size to be 4 lakhs. You anticipated your share to be 2 lakhs. That means you anticipated that your market share would be 50%. That is your first calculation. देख लो एक बार. बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. स्क्रीन पे फोकस करो. स्क्रीन पे फोकस करो. बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. मैं जितना सॉल्व कर रहा हूं उसी पे ध्यान देना. नो रिसर्च, नो डेवलपमेंट, नो ओवर थिंकिंग. जो बोल रहा हूं उसी पे ध्यान दो. रिसर्च बाद में करेंगे, ना नहीं बोलूंगा मैं. चलो, ये समझा फर्स्ट पार्ट. 50% कहां से आया? ओके. नाउ आपने एक्चुअली बनाया 165, लेकिन एक्चुअल मार्केट साइज 375 हो गया था. तो 165 डिवाइडेड बाय 375. ओ तेरी, माय एक्चुअल मार्केट शेयर इज 44%. ये समझा क्लियरली? अरे, हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. एक मिनट. एक बात बताओ. 21 lakhs आपका सेल्स है, माइनस 12,66,000 आपकी कॉस्ट है. करेक्ट? तो आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन हुआ 8,34,000. करेक्ट? और हमको तो वैसे भी बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज योर कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 lakh यूनिट्स. So 4.17 per unit is your contribution. Which one? Budgeted. समझा? यहां तक कोई डाउट? सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी. ये होगी 10.5. ये 1692 900. 1692 900 divided by 1,65,000. 10.26 निकाल लिया. पूरा स्ट्रक्चर है अपने पास अभी. अरे ये सरनू, वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर भी निकाल लेते पर यूनिट. 6.33 और ये 1,074,150 डिवाइडेड बाय 165. 6.51. चलो, यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आया क्या आपको? मैंने सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस निकाली, एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाली जो मुझे सेल्स प्राइस वेरिएंस दे सकती है. मैंने वॉल्यूम निकाल के रखा है. मैंने पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल के रखा है, विच आई नीड टू अप्लाई फॉर मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, मार्जिन मिक्स वेरिएंस. बराबर? स्टार्ट करें? क्या मांगा है? प्रिपेयर द स्टेटमेंट showing reconciliation of budgeted profit to actual profit through marginal costing approach in as much detail as possible. अब ये अगर डिटेल में मांग रहे हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू सिंपली फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच. ध्यान से सुनना मेरी बात. वी आर नॉट सपोज टू अप्रोच, वी आर नॉट सपोज टू गो फॉर ट्रेडिशनल अप्रोच. डिटेल में मांगा है ना, तो डिटेल में तब होगा जब आप पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर स्प्लिट करोगे. सबसे पहली बात, 4 लाख का 3,75,000 होगा. अरे 4 लाख
कि मार्केट साइज 3,75,000 हो गई, मतलब 25,000 से कम हो गई। मार्केट साइज 25,000 से कम हुई, माई शेयर वॉज 50%। तो ये मुझे 12,500 यूनिट्स तक अफेक्ट होना चाहिए था। 12,500 यूनिट्स तक मुझे अफेक्ट होना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 4.17। ये देखो आपका फर्स्ट वेरिएंस, समझा? एंड व्हाट इज इट? दिस इज योर मार्केट साइज, मार्जिन मार्केट साइज वेरिएंस, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, उधर पेंसिल से लिख दो बाजू में, पेंसिल से लिख दो बाजू में। मार्केट साइज अप बाय 25,000, standard rise should have been 25,000 into 50% share is equal to 12,500. प्रियंक अभी समझा बच्चा? 4 लाख का मार्केट साइज होना चाहिए था, वो 3,75,000 हुआ। मार्केट साइज कितने से गिरा? 35,000 से। ए तू सेल्स वेरिएंस अटेंड किया क्या प्रियंक? मार्केट कितने से गिरा? 25,000 से। मेरा शेयर कितना था? 50। जब 100 बिकते हैं ना, लो सब सबके 100 बिकते हैं टोटल, मेरा 50 होता है। तो अगर सबका 25,000 से कम हुआ तो मेरा 12,500 से कम होना चाहिए था। तो 12,500 से कम होगा, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास अवेलेबल है, एडवर्स वेरिएंस मिल जाएगा। अरे इज दिस क्लियर? ए सब लोगों को लॉजिकली क्लियर है सब कुछ? तो फिर दूसरा इंपैक्ट क्या है? अभी सुनो ध्यान से। ए 375 हुआ, अरे 375 हुआ ना। 3,75,000 का, 3,75,000 का 50% होना चाहिए था मेरा, 187,500, बराबर ना? अरे अगर शेयर 3 लाख, सबके 3,75,000 बिकते तो मेरे होने चाहिए थे 187,500। मेरे हुए कितने? सिर्फ 165। कितना कम बेचा मैंने? कितना कम बेचा मैंने? 22,500 मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.17। ओके, कैसे है पता चला? 6% से मार्केट शेयर गिरा मेरा, 6% से मार्केट शेयर गिरा मेरा। तो 375 इंटू 6% मेरा कम निकला, 22,500 कम निकला, मल्टीप्लाइड बाय रेट। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। हैं जी? एकदम क्लियर है? हैव अ ग्लांस ऑन बोथ क्विकली। चलो डन। बच्चा लोग क्लियर है? हाँ तो वो भी दिखा देता ना तेरे को, कैलकुलेशन तेरे को लिखना है तो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। 3,75,000 का 50% होना चाहिए था,
लेकिन 3,75,000, लेकिन आपने 1,65,000 ही बेच दिया इंटू 4.17, 165 है ना? हाँ, निकाल लो आंसर। 375 इंटू 50% शुड हैव बीन द क्वांटिटी, बट आपकी तो हो गई 165। 22,500 इंटू 4.17, 93,875, एंड मार्केट शेयर गोज डाउन, दैट्स व्हाई एडवर्स। मुझे बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? दोनों सॉल्यूशंस दिया आप, सी मैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देते रहता हूँ, आपको जो सिंपल लगता है, जो स्ट्राइक होता है फॉलो करो। एक ओरल कैलकुलेशन हो सकता है, भाई 50 होना चाहिए था, 44 पे आ गया मार्केट शेयर, 6% कम हुआ, तो 375 अगर मार्केट में बेचता है तो इट हैज हिट मी टू द एक्सटेंट ऑफ 6%, सो दैट इज ऑल्सो 22,500। या फिर ऐसा सोचोगे 375 सबका बिकता है तो मेरा 50% यानी कि 187,500 जाना चाहिए, मेरा गया 165, तो कितना नहीं गया? 22,500, बात तो एक ही है। अब प्राइस का सिंपल, प्राइस वेरिएशन multiplied by actual quantity will give you price variance. Cost variation multiplied by actual quantity will give you cost और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। जो हमने कल से टाइम स्पेंड किया था ना, 2 दिन हम लोग ने जो स्पेंड किए, वो ये क्वेश्चन समझने के लिए, ये सारे क्वेश्चन समझने के लिए। अब रिकंसिलेशन समझ में आया होगा आपको, तो क्या है, स्प्लिट करके इधर रिकंसिलेशन बना देते हैं, सिंपल। इन सबको जब स्प्लिट करोगे तो रिकंसिलेशन बनेगा, सिंपल। समझे? बोलो मुझे इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। क्लियर? जल्दी बताओ मुझे फटाफट। किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई डिड आई स्पेंड 5 hours ऑन एक्सप्लेनिंग यू वो बेसिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन लोगों ने तो अज्यूम कर लिया था कि तुम लोग को बेसिक आता है, which is not the case. Are you guys crystal clear about whatever we have discussed so far? चलिए, now investigation of variances. What are the factors to be considered while investigating size? Output level should be the same and all that. Then type of variances, which variances we should calculate. We don't stop at volume in fixed overheads. We go for calendar capacity, idle time, efficiency, root level cause. Cost structure you decide. Pattern of variances. आपको कैसा चाहिए? Traditional or planning operational? And then you also take into consideration the budgetary process. On what grounds? How do you decide standards and budget? Method used for investigating variances. सीधे जैसे आपको पता चलता है वेरिएंस एडवर्स है या फेवरेबल है, you simply go for certain क्राइटेरिया, मतलब 5% से ऊपर है तो भी तो ही रिपोर्ट करेंगे। देखो 100% एक्यूरेट कॉस्ट तो आएगी नहीं, देयर विल बी सम वेरिएशन, आइदर इट विल बी एडवर्स और इट विल बी फेवरेबल। तुम लोग हर एडवर्स एंड फेवरेबल अगर इन्फॉर्म करने लगे मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट के दिमाग की धज्जियां उड़ जाएगी। रिपोर्ट पे रिपोर्ट भेजते रहोगे तुम। तो जनरली ऐसा होता है कि भाई 10% से ज्यादा वेरिएशन है तो मेरे को डिस्टर्ब कर, वरना शांतिवाड़ी में मेरे को काम कर दे। फिल्टर लगा दिया, तो मतलब एडवर्स वेरिएंस अगर 10% से ज्यादा है या 10% से कम है, मतलब 10% फेवरेबल है, 10% एडवर्स से ज्यादा है, तो मैं रिपोर्ट करूंगा। अदरवाइज 10% तक इट इज अंडरस्टूड। मतलब 120 घंटा, 100 घंटा मेरे को पढ़ाने को दिया एक बैच में, तो 110 या फिर 90 दोनों तक मेरी कंप्लेंट नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैंने 110 से ज्यादा लिया या 90 से कम लिया तो इंक्वायरी बैठेगी। तो फिल्टर हो जाता है ना, 95 में करता है, 99 में कोई करेगा, कोई 101 लेगा, कोई 102 लेगा, सेफ। सबका रिपोर्टिंग नहीं होगा। एंड देन स्टैटिस्टिकल। Two mutually exclusive states are possible. मतलब first you assume that the system is in control and variance is simply due to random fluctuations. And the second is the system
is out of control and corrective actions are to be taken to rectify the situation. मतलब वही कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल है तो छोड़ दो, मार्केट में चेंज हुआ है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनएफिशिएंसी की वजह से है तो दैट इज कंट्रोलेबल, तो ट्राई टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। प्रोडक्टिविटी को लेके प्रॉब्लम है, 20,000 किलो डालना चाहिए था 18,000 में बना दिया, तो फेवरेबल वेरिएंस की वजह हाई प्रोडक्टिविटी है। ओके, सो तुम लोग उस पर फोकस करो, लेकिन 20,000 किलो के बदले 21,000 केजीज डाल दिया, तो वजह प्रोडक्शन मैनेजर, उस पर फोकस करो। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर नॉट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब इन्होंने सारे वेरिएंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, दिस इज योर होमवर्क, यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस। मैंने हर एक वेरिएंस का डिटेल में तुम लोग को बताया था, रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या है, एवरीथिंग एवरीथिंग आई हैड एक्सप्लेन्ड। एक भी वेरिएंस मैंने छोड़ा नहीं है, देख लो। हमने पहले लेबर का सम किया था डिटेल में, क्योंकि लेबर ज्यादा था, लेबर में 7 थे। फिर मटेरियल के 5, वेरिएबल के 3 मैंने डिस्कस कर दिए, फिक्स के ऑल 7 आर डिस्कस्ड, सेल्स के ऑल 7 आर डिस्कस्ड। जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन दिस। तो कल से हम लोग ये बाकी का फैक्टर्स चालू कर देंगे। कल तो अपना लंबा सेशन है, टेस्ट मैच है, तो कल मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा किसी भी कीमत पर, ठीक है? सो सी यू टुमारो गाइस। यार नो, इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोलते रहो। हाँ, व्हाट फॉर वेरिएबल कॉस्ट? वी आर टेकिंग एक्सपेंडिचर वेरिएंस ओनली फॉर फिक्स कॉस्ट बेटा। You are following marginal costing. If you are following marginal costing, you are not supposed to take variances, including or variances dependent on absorption rate. Whenever you follow marginal costing, you don't follow absorption costing. So absorption rate, अरे कितनी बार बोला था मैंने ये, तो वही तो है फिक्स्ड। हाँ, तो वेरिएबल के लिए 1 मतलब कंबाइंड ही निकाल दिया इन लोगों ने, तो तेरे को निकालना है तो 3 अलग निकाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। पहले टोटल निकाल दे, कॉस्ट वेरिएंस, फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी, चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा। उन्होंने नहीं किया है, फाइन, दैट इज देयर लुकआउट, तू करेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके, तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हम लोग तो हमेशा रूट कॉज के लिए जाएंगे रे। यस, आगे बढ़े। आई होप यू गाइस आर कंफर्टेबल। अरे ना, तेरे सारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं ना बेटा? अरे वो रूट कॉज वाला किसने लिया था स्क्रीनशॉट थोड़ी देर पहले? अच्छा चल, मैं दे ही देता हूँ तेरे को। ना 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 ना, ई ले बेटा, प्रियांक। No, 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 Arnav. I don't get irritated with your doubts. Don't worry. I don't like when you think or do research when I'm explaining this. Again, my objective is very simple. I want you to understand and then start doing research. समझा? बाकी कुछ नहीं है। तू कितना भी पूछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तेरा एक भी डाउट मैंने अनआंसर्ड नहीं जाने दिया। या चलो, बाय बाय।